Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, welcome to lecture 10 of Signal and System course. So in our last lecture, we developed a representation for aperiodic signal in terms of complex exponential signals, and that representation was given the name of continuous time Fourier transform. So the two equations that we derive are this one. So x of t, which is a continuous time non-periodic signal, we can make use of this integral. And with the help of this equation, which is known as Fourier transform, so this equation helps us to take any non-periodic continuous time signal and represent it in terms of this basic signal that we have been using since chapter number 1, e omega. And the other equation, so if I am given a signal x of t, and if I want to represent it in terms of function of omega, so I can make use of this equation. So when you apply Fourier transform, what happens is signal, which is represented as function of time, it gets transformed into another function that is represented as capital X. And now this function is going to be represented in terms of another variable omega, and omega is the symbol that we use for frequency. So you can say that Fourier transform help us to transform or map a continuous time non-periodic signal into frequency domain representation. And we also give the name to this. So this particular equation is known as synthesis equation of Fourier transform. And this equation is known as analysis equation of Fourier transform. And if you remember in our last lecture, how we developed this representation. So we started with this representation. Let me show you the so what we did last time, so that we end up with this representation, is that we wanted to find out how can we represent this signal, which is aperiodic signal. And we were interested in developing a representation of this signal in terms of exponential signal. Now, what we did, we already knew that for periodic signals, we have Fourier series. Okay? So for periodic signals, we know that we have a tool available that is known as Fourier series. And with the help of Fourier series, we can always represent periodic signal in terms of complex exponential signals. So in order to find out the representation for a signal like this, what we did was we converted this aperiodic signal into a periodic signal. So now this signal
it get transformed into this signal, and this is now a periodic signal. But this is a periodic signal which we constructed from this signal. So if you look at the shape of the signal, if you look at the shape of this periodic signal, it is actually the repetition of this shape after time period. So once we have a periodic signal, then we can always represent this periodic signal in terms of Fourier series. But our actual goal is to represent this aperiodic signal. Okay. So what we can do with this periodic signal so that it becomes exactly like this. So it's obvious that we have to increase this period t. When we increase this period t, the similarity between this signal and this signal, it increases. And in the limit when this capital T becomes equal to infinity, it means we have a periodic signal with infinite period, but periodic signal with infinite period is actually this aperiodic signal. So what we did, we converted, we saw what could happen to the Fourier series under this condition that t approaches to infinity. So under t approaches to infinity, what happens is that Fourier series becomes converted into Fourier transform. In Fourier series, we have summation, but under this condition, the summation becomes converted into integration because the discrete nature get transformed into continuous nature. So this is something that we discussed in our last lecture. And based on that, we ended up with these two equations. One is synthesis equation, another is analysis equation. But now we can also look at another important feature, and that is you can also find out Fourier series of a periodic signal with the help of Fourier transform. So what is the statement I'm making? I'm saying that we can find Fourier series of any periodic signal by taking samples of Fourier transform of its one period. So we can find Fourier series of any periodic signal by taking samples of Fourier transform of its one period. Now, previously, we started with a periodic signal and we converted it into periodic signal. Now, if you go into the reverse direction, let's assume that we are given this periodic signal. If we are given this periodic signal, it means it will have a Fourier series. But if you take its one period, so now if you consider this, that it is given to you, and if you only consider one period of this signal, so as an example, this is the one period. So rather than, let me show, this is one period, which is right over here. So this is now, I can say this is actually one period of x hat t. So now if you only consider one period of this periodic signal, so it's obvious that by its nature now this is a periodic signal. And now if you have a periodic signal, it means it will have Fourier transform representation.
So based on this, if I want to find out the Fourier coefficients of this periodic signal, x hat t. So what will be the Fourier series representation? The Fourier coefficients of this signal can be calculated with the help of this equation. It's over one period. So I will say we have to consider one period. So for this given periodic signal, if I want to find out what are the Fourier coefficients, this is the equation I can use. Now, as I am mentioning, I'm talking about this thing many times, that in this equation, all we need to do is integrate it over one period, but it doesn't matter which period we consider. Okay? All we need to do is to make sure that the integration interval should be equal to one period of it. So based on this particular figure that I have drawn, I can take period from 0 to capital T. I can take from plus T to 2T. I can also take from minus T to 0. I can take from minus 2T to minus T. All of these will give me the same result. But I want to apply this particular integration to this interval. So it will be convenient for me if I take this interval from minus T to plus T by 2. So this is minus T by 2 to plus T by 2. So now if I change this interval, so it means I am going to integrate from minus T by 2 to plus T by 2, which is equal to one time period. But I can see that in this interval, whether I use this signal or whether I use this signal, I am going to get the same result because they are similar within this interval. So it means in this particular integral, I can replace this by x of t. Okay. But you already know that x of t is basically one period of the signal. Okay, x of t. And then even if I take the integration from minus infinity to plus infinity, I will still get the same result because outside of this interval, this signal is 0. So now what I can do is, rather than integrating from minus t by 2, even if I integrate it from minus infinity to plus infinity, I can still get the same answer. Let me correct one mistake over here in this representation. This is, if you remember, this is in terms of k omega naught t. So this is one mistake that I need to correct. This is the original equation, k omega naught. Okay. So even if I change the limit from minus infinity to plus infinity, so previously I was integrating between these limits. But even if I bring this interval to minus infinity and move this integration to plus infinity, I can still get the same answer because this signal is 0 outside of the signal. Now, in this particular equation, this thing, I can replace this by a function which we have already introduced, and that is Fourier transform x of j. But you can see that in this integration, the variable is not omega, it is k time omega. So what we need to do is, we need to put omega equal to k omega. So as it means Fourier coefficients
AK are equal to 1 over T, and then Fourier transform evaluated at omega equal to K omega. And what is, let me write this, what is this thing? It is Fourier transform of x of t. Now, if you now read this statement which I made, what is the statement? We can find Fourier series of any periodic signal by taking samples of Fourier transform of its one period. Okay. So if you look, what is x of t? X of t is one period of x hat t. And what is x hat of t? X hat t is the periodic signal. So now, if you want to find out the Fourier coefficients of any periodic signal, what you can do? You can just consider, or you just need to take only one period of that signal. As a result, what will happen to the periodic signal? It will become non-periodic or aperiodic. When it becomes non-periodic, then you can find its Fourier transform. And if you now want to find out the Fourier coefficients of the actual signal, what you need to do? You need to take the sample. So this taking samples means replace omega by k omega naught. This is what is the meaning. So now you have another equation to find out the Fourier coefficients of any periodic signal. So now, what are the two equations that you can use? So one of the equation, so how to find Fourier some of the students are telling me that they can't hear me. So what about other students? Can they hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Clear, आवाज sir. कभी कटती है Again, अगर बाकी स्टूडेंट्स को सही आ रही है, इसका मतलब है कि मेरे एंड पे इशू नहीं है, एंड जो प्रॉब्लम है आपके एंड पे, ठीक है. तो अगेन आई विल सजेस्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड करता हूँ, तो जो चीज़ अनफॉर्चुनेटली आपसे मिस हो रही है बिकॉज ऑफ द पुअर नेटवर्क कनेक्शन, तो फिर आप वीडियो लेक्चर दोबारा सुन के जो जो भी चीज़ आपसे मिस हो चुकी होगी वो आप कवर कर लेंगे. अगर प्रॉब्लम मेरे एंड पे होता तो फिर मैं कुछ करता, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो मैंने कंफर्म कर दिया है को उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज प्रॉब्लम एट योर एंड. ओके. सो हाउ टू फाइंड Fourier series coefficients of periodic signal? तो इसका आंसर ये है कि एक तो हमारे पास ओरिजिनल Fourier सीरीज जो हमने पढ़ी है उसकी रिलेशनशिप ये है, और आफ्टर स्टडीइंग Fourier ट्रांसफॉर्म अब हमारे पास एक और मेथड भी है Fourier कोएफिशिएंट्स फाइंड करने का, वो ये है और इसमें फर्दर मैं क्या ऐड करूंगा कि ये क्या चीज है. दिस इज Fourier transform of one period of x. So this was something which I wanted to relate कि आप Fourier series और Fourier transform में close relationship है. Based on that,
अब हम दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं. Now the second question is, can we find Fourier transform of any non-periodic signal? तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, दिस वन. सो क्या ये इक्वेशन हम एवरी पॉसिबल सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो आई विल से इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस की हम बात कर. इज द सेम क्वेश्चन जो हमने फोरियर सीरीज के केस में इसका आंसर फाइंड किया था. और वो क्वेश्चन क्या था? कैन बी फाइंड फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल. अब हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में. सो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा? इट इज द सेम क्वेश्चन that we are asking, that whether all non-periodic signals will have Fourier transform representation. So we need to answer this question. और इसको मैथमेटिकली मैं पहले इसको कन्वर्जेंस को हम एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं कि किस बेस के ऊपर हम कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हुआ. ठीक है ना? सो बेस्ड ऑन दिस अगर हम कहें, लेट्स गो बैक टू द इक्वेशन. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर. ठीक है. तो हमने एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है. अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि इस इक्वेशन से जो मेरे पास सिग्नल आएगा वो एक्स ऑफ टी होना चाहिए. ठीक है. आपके पास एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म था. उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपके पास ये वाला सिग्नल आना चाहिए जिसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. मैं इसको इस तरीके से कह लेता हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हमने इसका लिया और इसको जब हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, लेट्स अज्यूम कि इससे जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो एक्स ऑफ टी नहीं है बल्कि इट इज सम सिग्नल which is different from the other signal. इसको मैं x of hat. Now the question is, जो हमने आंसर करना है, when is x hat t a valid representation of the original signal. ओरिजिनल सिग्नल हमारा कौन सा है? x of t. So the condition under which this will be a valid representation of original signal, उसकी एक कंडीशन ये है कि हमारे पास x of t अगर फाइनाइट एनर्जी होना चाहिए. So let me go back. So if x of t has finite energy, और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं. अगर एक सिग्नल हम कह रहे हैं कि इसकी फाइनाइट एनर्जी है, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप x ऑफ t का मैग्नीट्यूड लें, उसको स्क्वायर करें और फिर उसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस आंसर शुड बी लेस देन इंफिनिटी.
which will mean के signal has finite energy. इसका इफेक्ट क्या होगा अगर एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है जिसकी एनर्जी फाइनाइट है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म कौन सी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ? इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो सिग्नल है, अगर ये फाइनाइट एनर्जी सिग्नल होगा, जब आप इस किस्म के सिग्नल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आएगा? इट विल आल्सो बी फाइनाइट। और हम कहेंगे कि हमारा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। इसका मतलब क्या होगा? देन we are guaranteed that x of j omega is finite. या हम कहेंगे it converges. And error between x hat t and x of t, that is error को मैं e of t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x hat t minus x of t. will have zero energy. It means equal to. तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, इसको मैं कंडीशन 1 कह देता हूँ। इफ यू लुक एट, हमने स्टार्ट क्या लिया? हमने इस चीज का आंसर देखना फाइंड करना था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म के सिग्नल के लिए कन्वर्ज। तो इसके लिए हमने ये कंसीडर किया कि अगर हमारे पास एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल कौन सा है? एक्स ऑफ टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस वन। अब जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन जो कि इस ओरिजिनल सिग्नल की है, इसको इस इक्वेशन में यूज करूंगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास यही सिग्नल आना चाहिए। लेकिन मैंने इसको मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिप्रेजेंटेड कि इस इंटीग्रेशन से जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो ओरिजिनल सिग्नल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विद दिस डिफरेंट नोटेशन एक्स एट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा तो ये जो सिग्नल आया है, जो कि इस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है, इनमें कितना डिफरेंस। ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज, इसको हमने किस तरह इंटरप्रेट किया कि हमने एक कंडीशन ये डिफाइन कर ली कि अगर एक्स ऑफ टी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल हो, जिसका मैथमेटिकली मतलब ये है, इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? फाइनाइट होगा या कन्वर्ज। ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हुआ? जो पहले क्वेश्चन हमने पूछा था, कैन वी फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स? उसका आंसर क्या हो गया कि इफ सिग्नल हैज फाइनाइट एनर्जी देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल कन्वर्ज और इट विल एग्जिस्ट। ठीक हो गया। फिर हमने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उस फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से क्या हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर हमने कैसे देखा कि इस ट्रांसफॉर्म जब ये कन्वर्ज होगा, इसका मतलब है कि हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी, इसको पुट करके मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है एक्स हैट टी। अब एक्स हैट टी और एक्स टी में जो डिफरेंस होगा उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है?
इस ई ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जब आपके पास फाइनाइट एनर्जी सिग्नल होगा उस केस में क्या होगा, एक्स हैट टी और एक्स टी में डिफरेंस तो होगा, लेकिन इस डिफरेंस जो सिग्नल है, जिसको आप एरर सिग्नल भी कहते हैं, इसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी। सो इफ यू गो बैक टू माय एक हमने एक स्टेटमेंट किसी लेक्चर में दी थी कि अगर आपके पास दो सिग्नल्स हों जो शक्ल जो शेप में डिफरेंट हो, लेकिन उनकी एनर्जी अगर सेम हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सिग्नल्स क्या हैं, सेम सिग्नल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल फॉर ऑल practical systems. There is no difference between two signals if they have the same energy. तो अगर एरर सिग्नल में जो एरर सिग्नल की अगर एनर्जी जीरो है, इट मींस एक्स हैट टी और एक्स ऑफ टी दोनों क्या हैं, सेम। इट मींस के ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ रही है विद यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो क्या है, वैलिड है। नाउ इन अ सिमिलर मैनर हमारे पास एक और सेट ऑफ कंडीशन भी है जिसको हम डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं, जो हमने फोरियर सीरीज के केस में भी पढ़ी थी। सो what are the three conditions which must be satisfied by a signal so that Fourier transform is a valid representation? वो कौन कौन सी हैं? पहली स्टेटमेंट जो है वो ये है कि हमारे पास जो सिग्नल होना चाहिए वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। x of t is absolutely integrable। इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होगा कि एक सिग्नल को अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और उसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिस आंसर शुड बी लेस। सेकंड कंडीशन, x of t has finite number of maximas and minimas within any finite interval। और थर्ड कंडीशन क्या है? So basically ये जो Dirichlet conditions है, it is a set of three conditions which must be fulfilled by signal so that its Fourier transform converges. X of t has finite number of discontinuities. Finite number of discontinuities within any finite interval. Also, each discontinuity must be finite. So अगर आप इन कंडीशंस को कंपेयर करें जो हमने पीरियोडिक सिग्नल की, जब हम फोरियर सीरीज के बारे में हमने आंसर करना था कि क्या किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसमें भी आपको यही कंडीशन नजर आई। ठीक है, डिफरेंस क्या था? क्योंकि इस केस में जो हमारा सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक, तो इसमें अगर आप देखें जब हमने फोरियर सीरीज के लिए डायरेक्टली कंडीशंस को मेंशन किया था तो हमने कहा था कि x of t should be absolutely integrable over one period। तो उसमें हम पीरियड की बात कर रहे थे। अब x of t नॉन पीरियोडिक है, तो जो हम एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी को हमने चेक करना है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए चेक करना है। तो ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। दूसरा सेकंड कंडीशन को अगर आप देखें, x of t should have finite number of maximas और minima। ये कंडीशन फोरियर सीरीज के लिए भी थी, लेकिन क्या था, विद इन वन पीरियड था।
लेकिन अब क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक है तो हम इसको लिख रहे हैं विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल। और थर्ड कंडीशन भी एग्जैक्टली फोरियर सीरीज वाली कंडीशन है कि एक्स ऑफ टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। लेकिन उसमें हमने क्या क्या कहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज विद इन वन पीरियड। अब हम कह रहे हैं विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल। और दूसरा हमने क्या कह रहे हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंडीशंस दैट वी यूज्ड फॉर फोरियर सीरीज। डिफरेंस क्या है कि उस फोरियर सीरीज के केस में हमारा सिग्नल पीरियोडिक था, अब हमारा सिग्नल जो है वो नॉन पीरियोडिक। तो ये डिफरेंस आपको नजर यस समवन हैज आस्क्ड कि अगर आपके पास सिग्नल जो है फाइनाइट एनर्जी नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जी वो क्या होगा, वो कन्वर्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि एवरी नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल विल हैव अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, या तो सिग्नल इस कंडीशन को फुलफिल करेगा या उसको ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हमारा सिग्नल इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हम कहेंगे कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा। क्योंकि अगर इस इक्वेशन से आपके पास आंसर अगर इस इक्वेशन से आपके पास आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तो आप यही कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म डजंट एग्जिस्ट। तो नाउ ये इक्वल टू इंफिनिटी कब आएगा, वो हमने इसका आंसर दे दिया है कि अगर ये सिग्नल एक्स ऑफ टी कंडीशंस जो हम